और क्वाड्रेंट के हिसाब से the series will become like this. Okay, now what is the value at pi by 2? It is k. The value of the function, at pi by 2 is equal to k. So what will happen? It will become k is equal to 4k by pi into this series, right? So k से k cancel हो जाएगा and it will become pi by 4 is equal to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus dash dash dash. And this is known as Leibniz series. So you can see the sum of this series 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7, which was not known for a long period of time, क्योंकि term subtract भी हो रहा है, add भी हो रहा है, तो nobody had imagination कि बहुत बहुत large values पे क्या होने वाला है, whether it will converge, whether it will diverge. तो इसकी वैल्यू आ जाती है pi by 4. This series is known as Leibniz series. So इसका मतलब ये हुआ कि फुरियर सीरीज के हेल्प से we can also solve many infinite series. फुरियर सीरीज के हेल्प से हम बहुत सारी इनफाइनाइट सीरीज को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, like this. Okay, by substituting the suitable value you will get different type of series. Okay, so now we have learned about the full series. So let us take up some problems on full series. Full series को लेके कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, सो मैं एक प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहा हूं, एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके, सो इस एग्जाम्पल के साथ हम ये समझ सकते हैं कि जब मैं कहता हूं कि फुरियर सीरीज के हेल्प से हम किसी सिग्नल की एनालिसिस कर सकते हैं, सो दिस इज एन एग्जाम्पल जिसके हेल्प से हम किसी सिग्नल की एनालिसिस कर सकते हैं. तो सपोज तुम्हारे पास एक साइनोसॉइडल सिग्नल है which is like this, and this signal is given by E is equal to E naught sin omega t. Now this signal is passed through a half wave rectifier. Okay, we will pass this signal through half wave rectifier, and what will happen? This will be converted into a signal like this, right? You know that the negative part will be gone in half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर में जो नेगेटिव पार्ट है सिग्नल का वो चला जाएगा. ठीक है, अब ये सिग्नल के हार्मोनिक्स कैसे हैं? तुम्हारा पर्पस है हाफ वेव रेक्टिफायर के हेल्प से एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. तो कितने लेवल पे आपको सक्सेस मिला है वो सिग्नल के एनालिसिस के बाद पता चलेगा. नाउ ये सिग्नल कैसा है? दिस सिग्नल इज एफ टी इज इक्वल टू 0. This value is minus pi to pi. So in terms of t, it will be pi by omega. And
minus pi by omega. If I take this axis as t and this function as f of t, right? So this will become 0 when it is between minus pi by omega to 0, and this will become e naught sine omega t when it will be between 0 to pi by omega, right? So ये हमारा सिग्नल है. अब इसकी एक्चुअल एनालिसिस जो है वो फुरियर सीरीज के हेल्प से हो सकती है. जब तुम इसको फुरियर सीरीज में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं और उनके रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स कैसे हैं. ठीक है. तो अब हमारे लिए ये एक केस है माइनस एल टू एल वाला, राइट? दिस इज अ केस which belongs to minus L to L. And what is the value of L? It is pi by omega. The value of L is pi by omega. And my f of t will be given by a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x by L. So यहाँ पे हो जाएगा n pi t by L, which is pi by omega, plus bn sine n pi t by pi by omega, right? So this will become f of t is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity and an cos n omega t plus bn sine n omega t. ये बन जाएगा तुम्हारा सीरीज. Now you have to calculate the values of a naught, an and bn so that we can put it here. अब यहाँ पे अगर हमारे पास सिर्फ डीसी सिग्नल आ जाता और बाकी सारे टर्म जीरो हो जाते, राइट? सपोज मेरे पास एक डीसी सिग्नल आ जाता और बाकी सारे टर्म जीरो हो जाते तो हमारा 100% मोटिव पूरा हो जाता, क्योंकि हमारा मोटिव था एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. बट लेट अस सी कि कितना वो मोटिव अचीव हो पाया है. सो now let us calculate the first value, that is a naught. It will be 1 by L, which is pi by omega. क्या होता है a naught का फॉर्मूला? सो माइनस एल टू एल, लेकिन हमारा फंक्शन पूरे में सेम नहीं है तो यहां तक तो जीरो ही है. तो आई विल ओनली राइट 0 टू एल एंड e naught sin omega t and dt. So this will become omega by pi e naught. Sine will become minus cos omega t by omega and 0 to pi by omega. So this will become minus e naught by pi into cos of pi minus cos of 0. So it will be 2 e naught by pi. Right? 2 e naught by pi. So जो फर्स्ट टर्म आ गया, डीसी टर्म आ गया, वो कितना आ गया? e naught by pi. तो हमें एक डीसी वोल्टेज मिल रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है? e naught by pi है. The value is e naught by pi. तो if e naught is the amplitude of the signal जिसको तुमने इनपुट किया था,
So E naught by pi is the DC voltage that you are getting out of this. Now let us see the other terms like Bn. So if you write B of n, it will be 1 by L, which is omega by pi, integral 0 to pi E naught sine omega t into sine n omega t dt, right? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जब जब अलग होंगे जीरो हो जाएगा बाय Euler's identity, right? So this will become Bn is equal to 0 when n is not equal to 1. जैसे ये different होगा, this will become 0. Okay? और जैसे ही ये same होगा, तो ये बन जाएगा B1 and it will become omega by pi E naught 0 to pi sine square omega t and dt. So this will become sorry 0 to pi by omega, right? So you have to write this. इसको ऐसा कर लेता हूं कि ओमेगा टी को थीटा लिख देता हूं, तो इंटीग्रल 0 टू टी इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पे पाई बन जाएगा, राइट? इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा इनटू dt will become d theta by omega and this value is pi by 2, so this will become pi by 2 omega, right? Or you can solve it simply also. So it will become omega E naught by pi into pi by 2 omega. Pi and pi will cancel and it will come out to be E naught by 2. All right. तो जो मेरी सीरीज बन रही है वो बन रही है एफ टी इज इक्वल टू ई नॉट बाई पाई, ये डीसी टर्म हो गया, प्लस बी वन ई नॉट बाई टू, बोलो भाई, साइन ओमेगा टी and plus dash 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 other terms that will come from an. an से भी तो टर्म्स आएंगे कोसाइन वाले। तो ये देखो तुमने एक डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी बट ये बहुत ही बुरा रेक्टिफायर है, बिकॉज यहाँ पे तो खुद ही साइन ओमेगा टी प्रेजेंट है विद जस्ट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। ई नॉट साइन ओमेगा टी तुमने लगाया था, ई नॉट बाई टू साइन ओमेगा टी तो खुद ही सिग्नल में प्रेजेंट है, और प्लस ए एन वाले टर्म भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है? सो कैन यू कैलकुलेट क्विकली द वैल्यू ऑफ ए एन? आई विल गिव यू सम टाइम। Okay, so what is half series? Suppose you have a function in the limit 0 to L. Okay, you have a function in the limit 0 to L
which is some function. Don't consider to be a sine function. Suppose it is like this, okay, little bit like this, and you want to expand this function in some series, some infinite series, Fourier series. So what is the possibility? एक possibility है कि तुम इसको इस तरीके से extend कर दो, like this. And another possibility is that you may extend it like this. If you choose to extend this function like this, obviously it is sine series or odd series. And if you choose the same function to extend like this, it will be called cosine series or even series. So same function can be written in the form of sine series and same function can be written in the form of cosine series. जैसा भी आप एक्सटेंशन करना चाहते हो आपके हिसाब से वो एक्सटेंशन किया जा सकता है और एक एक्सटेंशन साइन सीरीज बन जाएगा, दूसरा एक्सटेंशन कोसाइन सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जनरल कोई फंक्शन ले लूं ऐसा ही, दिस इज सपोज एफ एक्स, राइट, एंड सपोज दिस फंक्शन इज सम 0 to L फंक्शन, इस तरीके से ले लूं तो मेरा फंक्शन बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x by L. This is for odd series, and it will be fx is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos n pi x by L as even series. This will become odd series, this will become even series. और यहाँ पे let me write the Fourier coefficients also and you may derive it also. So the Fourier coefficients can be written as, यहाँ पे देखो, if you want to write bn, what is to be done? You will multiply fx by, बोलो भाई, by sin n pi x by L. This side it will become bn sin square n pi x by L. It will become integral 0 to L and dx. It will become integral 0 to L and dx. This side it will become bn into sin square. क्या बन जाएगा? Yes, sin square है, you will write it in as 1 minus cos by 2 और cos वाला का इंटीग्रल वापस साइन हो जाएगा, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे 0 होगा, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, अपर लिमिट पे कितना आ जाएगा L, और नीचे 2 है तो इट विल बिकम अपर लिमिट बाय 2. ओके, so bn will become, you should do it once quickly, 0 to L L upon so it will become 0 to L fx of sin n pi x by L. This will be the value of bn. And similarly
योर ए नॉट, ये कितना हो जाएगा 2/L 0 to L fx dx and an 2/L 0 to L fx cos n pi x by L and dx. So this is what is called Fourier half series, और L की जगह पाई भी हो सकता है. So that will become your 0 to pi formula. You can put L is equal to pi, and that will be the case of, so 0 to L and 0 to pi both can be treated as half series, and you can write everything. तो जब 0 to 2L लिखा हुआ है तो वो देख के आप नहीं बता सकते कि इट इज हाफ सीरीज और फुल सीरीज. लाइक सपोज 0 to 4 लिखा हुआ है तो यू कांट टेल, बिकॉज इफ इट इज अ फुल सीरीज आप लिखना चाहते हो तो इट विल बिकम 0 to 2L, and if you want to write half series it will become 0 to L. So here L will become 2 and here L will become 4. So the numbers itself will not tell you that it is a half series or full series. It is what you need to write. जो आप लिखना चाहते हो उसके बेसिस पे डिसीजन होगा. ठीक है, तो हाफ सीरीज में कोई डाउट? सो लेट अस नाउ सी कॉम्प्लेक्स Fourier series. So because you know sine and cosine are related to Euler's equation, so क्लियर इंडिकेशन है कि उस साइन और कोसाइन को मैं आइलर्स इक्वेशन से बदल के एक कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज में लिख सकता हूं. तो जो मोस्ट जनरल सीरीज होनी चाहिए वो कौन सी सीरीज होनी चाहिए? कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि इसी का, इसमें साइन भी है इसमें कोसाइन भी है, इसमें हाफ सीरीज भी बन जाएगी इसमें फुल सीरीज भी बन जाएगी, इसमें रियल सीरीज भी बन जाएगी इसमें इमेजिनरी सीरीज भी बन जाएगी, और इसमें कॉम्प्लेक्स तो है ही है. तो दिस इज द मोस्ट जनरल सीरीज. सो यहां पे मैं क्या करूंगा कि कोई भी मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू से इंफिनिटी एंड सी एन e to the power iota n pi x by L. This is the series. तो ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, और यही जब कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है तो एफ एक्स के बदले जो ये यहाँ सी एन लिखा हुआ है कोफिशिएंट, वही फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट वहीं से निकल के आ जाता है. बात समझ रहे हो? तो ये सीरीज डिस्क्रीट है, तुम्हारा फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, बट यही चीज अगर फंक्शन नॉन पीरियोडिक हो और डिस्क्रीट के बजाय कंटिन्यूअस हो जाए तो एफ एक्स के बदले जो यहाँ पे सी एन लिख रहे हो वही कॉन्सेप्ट आपका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन दे देता है. ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस. तो जरा इसको ओपन करके लिखो. तो एफ एक्स विल बी गिवन बाय डैश डैश डैश, लेफ्ट साइड से आ रहा हूं तो चलते चलते मुझे क्या मिलेगा? सी ऑफ -1 e टू द पावर माइनस आई पाई एक्स बाई एल प्लस C0 and plus C1 e to the power I by x by L plus dash dash dash. So this is what is known as complex Fourier series. और यहाँ पे ये जो C0 है, this is that DC term या constant term
जिसके बारे में आपने फुल फुरियर सीरीज में भी पढ़ा है। दिस इज दैट कांस्टेंट टर्म और डीसी टर्म। अब इसको भी कैसे हैंडल किया जाए, कैसे निकाला जाए इस कोफिशिएंट को? तो इसमें भी सेम पैटर्न अपनाना है, एफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एन पाई एक्स बाई एल से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे वहां पे साइन को साइन से कर देते थे, कॉस को कॉस से कर देते थे, वैसे यहां इससे कर दे, बिकॉज हमें सी एन चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस विल बिकम, इस साइड क्या बन जाएगा, सी एन। और मैं आपको बता चुका हूं समेशन के बाकी टर्म्स के बारे में, साइन और कोसाइन वाले में भी बताया था कि आपको कायदे से सारे टर्म लिखने चाहिए, फिर nth टर्म से भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, बाकी सबसे भी मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट? बट बाकी के इंटीग्रल्स करने के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और ये वाला आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? सो सपोज माय फंक्शन इज पीरियोडिक बिटवीन माइनस एल टू एल, राइट? तो दिस इज, सपोज आई एम राइटिंग फॉर माइनस एल टू एल, so this will become Cn minus L to L dx into minus L to L and dx. So Cn will be 1 by 2L minus L to L fx e to the power minus iota n pi x by L and dx. This will be the value of Cn. Okay? और C0 को अलग से निकाल लो. What will be the value of C0 if I calculate? 1 by 2L integral minus L to L fx and dx. This will be the DC term. और यहाँ पे बाई चांस अगर माइनस लिखा हो तो फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ अगर माइनस लिखा हो तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो किससे करोगे, प्लस से करोगे। यह चीज आपको दिमाग में रखनी है, राइट? आपको पहले से ही पता है, यू ऑलरेडी नो कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज। बस जब तक आपने कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज नहीं पढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज नहीं पता। बताओ कैसे? जैसे मैं अगर लिखूं साइन स्क्वायर एक्स विच इज 1 minus cos of 2x by 2, so this is 1 by 2 minus 1 by 2 into 1 by 2 e to the power iota 2x plus e to the power minus iota 2x, right? So it will become 1 by 2 minus 1 by 4 e to the power iota 2x minus 1 by 4 e to the power minus iota 2x. So that means C0 is 1 by 2, C1 is 0, C minus 1 is also 0, C2 is e to the power I nx, राइट? तो सपोज ये मैं माइनस पाई से पाई के लिए लिखूं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बिकम nx, राइट? So C2 will become minus 1 by 4 and C of minus 2 will also become minus 1 by 4. तो सपोज मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, इट इज लाइक दिस 0 to L and this is K. This is the function. So think about it. If it is extended in
odd series, how it will look like? It will look like this. And if it is extended in even series, then how it will look like? It will look like this, right? So let us write this is L by 2. Now हमें इक्वेशंस चाहिए होंगी. So इसकी इक्वेशन हो जाएगी 2k by L, right? Zero origin से पास हो रही है, y is equal to mx plus c. So m will become, so 2k by L into x. This is my function fx, and this axis is x. Correct? So इस वाले फंक्शन को भी लिख लो. तो ये स्लोप पॉजिटिव है, दिस स्लोप इज नेगेटिव. So it will be minus 2k by Lx plus intercept will be at 2k. You can use simple formula also. Y is equal to mx plus c, और इन कोऑर्डिनेट्स को रख के भी निकाल सकते हो इक्वेशन. सो अब मेरा fx आ चुका है. व्हाट इज माय fx? इट इज 2k by Lx between 0 to L by 2 and minus 2k x by L plus 2k between L by 2 and L. Okay, तो इसके सीरीज लिखते हैं. लेट अस राइट द सीरीज. सो अगर ऑड सीरीज लिखा जाए तो fx is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x by L. This is the odd series, and the value of bn will be 2 by L integral 0 to L by 2 and 2k x by L sin n pi x by L dx plus L by 2 into L by 2 to L minus 2k x by L plus 2k into sin n pi x by L and dx. This is the value of Bn. Now we should apply the UV method. So Bn will become 2 by L, 2k by L. So it is first function integration of second, which is minus cos n pi x by L
over n pi by L minus derivative of this and integral of this will become minus sine n pi x by L over n square pi square by L square and bracket close limit 0 to L by 2. Okay, and plus now this one, so it will be minus 2kx by L plus 2k into this minus cos n pi x by L by n pi by L minus derivative of this will be minus 2k by L and integral of this will be minus sine n pi x by L over n square pi square by L square, and we should put this also, this whole also in the limit L by 2 to L and this bracket close.